Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the next topic, that is the muscles of the arm. So before going towards this topic, we should be clear about what is an arm and what is a forearm, right? So we are often confused between the two. So the portion of the upper limb that is between the shoulder joint till the elbow joint, that is the arm, and the portion extending between the elbow joint till the wrist joint, that is the forearm. Okay, so now we're talking about the arm, the muscles of the arm. Okay, so we divide the arm into two compartments, anterior and posterior one. अगर हम क्रॉस सेक्शन करें, ठीक है, क्रॉस सेक्शन करें आर्म का, so there is single bone in it. So the portion of it anterior to the humerus bone, that is the anterior compartment, and the portion of it previous, or I mean posteriorly to the humerus bone, that is the posterior compartment of arm. Okay, so the anterior compartment is further divided into some other compartments. Okay, so basically दो facial septums होते हैं, the medial and lateral facial septums जो कि divide कर रहे होते हैं, medial और lateral होता है जो कि divide कर रहे होते हैं इनको हमारे आर्म को into an anterior and posterior compartment, and then there are some further septums जो कि divide कर रहे होते हैं anterior compartment को into still further compartments, right? So उनसे एक होता है, एक transverse septum होता है जो कि biceps को brachialis muscles से, यहाँ के muscles हैं biceps, brachialis and coracobrachialis. So जो septum biceps को separate करता है from the brachialis, that is a transverse सेप्टम, ट्रांसवर्स फेशियल सेप्टम. और देन एक और सेप्टम होता है, एन एंट्रोपोस्टीरियर सेप्टम लाइक दिस, वो सेपरेट कर रहा होता है ब्रेकियालिस को फ्रॉम द मसल्स अटैच टू द सुप्राकंडाइलर रिज, लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज. हर वो हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट यू शुड जस्ट बी नोइंग कि एंटीरियर कंपार्टमेंट के 3 मसल्स हैं, दैट इज द बाइसेप्स ब्रेकियाई, कोराकोब्रेकियालिस एंड ब्रेकियालिस, ठीक है. और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का जस्ट एक ही मसल, दैट इज द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, राइट. सो लेट्स टेक अ लुक एट द अटैचमेंट्स ऑफ ईच ऑफ दिस मसल्स. हमें इन चारों की अटैचमेंट्स करनी है, नर्व सप्लाई करनी है और एक्शन करना है. सो द फर्स्ट मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट इज द coracobrachialis. Okay, so as the name indicates, इसकी attachments भी ऐसी हैं. coracobrachialis मतलब it's coming from the coracoid process of scapula. Okay, and then it is getting inserted where on the medial aspect of the mid of the humerus bone, as you can see. So this is how it's going to be getting attached or just on the middle of the medial border or the medial aspect of the humerus इसकी attachment हो जाती है. And you can say ये थोड़ा innermost होता है, जो biceps muscle है वो थोड़ा superficial बड़ा होता है, इसलिए हमें ज़्यादा bulk उसका feel हो रहा होता है. So ये हो गया attachment coracoid process of scapula से लेकर middle border of the middle part of the humerus bone. And then second muscle is the biceps brachii, the very well known muscle. इसके 2 heads होते हैं, a short head and a relatively longer head. And इसकी फिर attachment 2 तरह की होती हैं. The short head is just like the coracobrachialis is coming from the coracoid process of scapula, while the long head is coming from the supraglenoid tubercle of the स्कैपुला बोन. वी सॉ दैट देयर वाज अ ग्लिनॉइड कैविटी जहाँ पर ह्यूमरस का हेड आकर अटैच होता है ऑन द स्कैपुला, एंड जस्ट अबव दैट कैविटी देयर इज अ ट्यूबरकल कॉल्ड द सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, जहाँ पर इस लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स की अटैचमेंट होनी होती है. सो इन दिस वे इसकी 2 हेड्स हैं. देन इसकी जो अटैचमेंट जो मेन टेंडन होता है, दैट इज गोना बी अटैच्ड ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस बोन. रेडियस बोन की हमने देखा था कि मीडियल साइड पे ट्यूबरोसिटी, जिसको हमने रेडियल ट्यूबरोसिटी का नाम दिया था, तो उसी भी इसकी मेन टेंडन की अटैचमेंट होती है. जबकि जो मेजर पार्ट होता है वो फ्लैट आउट होकर एपिन्यूरोसिस से बना देता है, विच इज़ गेटिंग इंसर्टेड ऑन टू द अल्ना बोन, ठीक है. सो इसकी रेडियस पर भी अटैचमेंट होती है और अल्ना पर भी अटैचमेंट होती है. सो दैट इज़ द अटैचमेंट्स ऑफ द हेड्स एज वेल दी tendon of the and the aponeurosis of the biceps brachii. The next muscle of the anterior compartment is the brachialis muscle, right? So जहाँ पर आकर coracobrachialis attach हो रहा था वहीं से emerge कर रहा होता है brachialis muscle basically. So इसका point of origin क्या होगा? Lower half of the front of humerus, right? एंड ऑल्सो फ्रॉम द मीडियन लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा जो हमने पीछे देखे हैं. एंड इसकी जो पॉइंट ऑफ इंसर्शन है, दैट इज द कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना एंड द अल्ना ट्यूबरोसिटी, विच आर द पार्ट्स ऑफ अल्ना बेसिकली. सो जस्ट लाइक द रेडियल ट्यूबरोसिटी जहाँ पर आकर बाइसेप्स अटैच हुआ है, देयर इज एन अल्ना ट्यूबरोसिटी जहाँ पर आकर ब्रेकियालिस अटैच हुआ है. अलॉन्ग विद द अल्ना ट्यूबरोसिटी देयर इज अ कोरोनोइड प्रोसेस एज वेल, वो भी एंटीरियरली ही होता है, पीछे होता है आई गेस योर प्रोसेस होता है, इसका नाम याद नहीं आ रहा, बट anteriorly on the ulna we have the coronoid process. So along with the coronoid process, the muscle, this brachialis muscle is getting inserted onto the ulnar tuberosity. Okay, the next muscle is the muscle of the posterior compartment basically, that is the triceps brachii, and it's having 3 heads, a medial head, a lateral head, and तीसरा कौन सा इसका हेड, लॉन्ग हेड, राइट. तो जस्ट लाइक द बाइसेप्स इसके भी डिफरेंट हेड्स हैं, बट अनलाइक दैट इसके 2 हेड्स, सॉरी 3 हेड्स हैं, राइट. सो द लॉन्ग हेड इज अराइजिंग, अच्छा हम देखा था कि जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स दैट वाज अराइजिंग फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला बोन, जबकि जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स दैट इज गेटिंग originating from the infraglenoid tubercle of the scapula. Just below the glenoid cavity there is an infraglenoid tubercle जहाँ से इसका long head basically emerge होगा, as you can see as well. And then there is a lateral head जो थोड़ा superiorly attach हुआ होता है,
and that is coming basically from the oblique ridge on the posterior surface of humerus, right? So on the upper part of humerus, posteriorly, क्योंकि हमें पता है कि triceps posteriorly present होता है, so on the upper part of humerus posteriorly there is an oblique ridge जहाँ से lateral head की origin हो रहा होता है, and the medial head is basically, as you can see as well, थोड़ा superficially लगा लेकिन थोड़ा deeper होता है दोनों heads के, and इसका attachment point थोड़ी हम देख रहे हैं थोड़ी inferiorly सी है. So on the posterior aspect of humerus there is a triangular area, right? So just below the radial groove, अच्छा हमने जब anatomy देखी थी humerus की वहाँ पे radial groove देखा था, just below it there is a area, triangular area from where it is the medial head is getting originating, ठीक है? तो इसकी तीनों heads की हमने देख ली origins, and then their all of their insertions are on a common point that is basically on the olecranon. हाँ मुझे ये याद नहीं आ रहा था, olecranon process of ulna. So anteriorly we have the coronal process of ulna, while posteriorly we have the olecranon process of ulna, जहाँ पर इन तीनों हेड्स ने आकर फ्लैटन आउट होकर टेंडन में आकर अटैच हो जाना है. एंड यू मस्ट नो कि जो लेटरल और long heads and these both are superficially, while the medial head is a bit deeper to it, right? So in this way we have the attachments of each of the heads of the triceps brachii as well. Now we should be knowing about the nerve supply and action of each of these muscles. So you should know कि जो anterior compartment की nerve है, anterior compartment of arm की nerve है, that is a musculocutaneous nerve. So the same nerve will be innervating each of the muscles of the anterior compartment, that is the biceps, brachialis as well as the coracobrachialis muscle. So these three are getting innervated by what? By musculocutaneous nerve. And the posterior compartment की nerve जो है, that is a radial nerve, so the triceps brachii will be innervated by the radial nerve. और अगर actions की बात की जाए तो biceps का action we know very well that it is a good flexor, और flexor से भी अच्छा supinator है forearm का. So it causes flexion at elbow joint, it causes supination at elbow joint, right? And the coracobrachialis, along with doing the flexion at the shoulder joint, it also helps in the stabilizing the scapula bone, because it is attached to the coracoid process of scapula. And then the brachialis muscle basically involved in the flexion of the forearm at the elbow joint. So coracobrachialis shoulder joint पे flexion करा रहा है, brachialis elbow joint पे flexion करा रहा है, और biceps almost दोनों जगह पे करा रहा होता है. And it's a very good supinator, it's a powerful supinator, and it's like ज़्यादा हमें लगता है कि flexion कराता है, but basically ज़्यादा supination करा रहा होता है at the elbow joint, right? Flexor at the elbow joint, and so the short head है वो flexor होता है arm का. So but and the action as well, and the action of the triceps brachii we know very well, that is to extend the arm and the forearm. So by its contraction it will be you can say causing the extension of the arm. So that is the action of the, it's a very powerful extension especially at the elbow level, right? और इसका long head होता है since it is attached to the coracoid process of scapula as well, the infralunar tubercle of scapula as well, so that's also helping in stabilizing the scapula, right? So in this way, by their attachments on different points, they're stabilizing different structures and causing movements at different structures. So that was all about the muscles and their attachments and their nerve supply and their actions of the arm. So अच्छा, एक और बात की जाती है कि जो ब्रेकियालिस मसल है, हमने सबका बोला कि अंटेरियर कंपार्टमेंट की नाम है मस्कुलोकुटेनस, ठीक है, लेकिन जो ब्रेकियालिस मसल है इसकी एक ख़ास खसूसियत है दैट इट इज़ डुअली इनोवेटेड. इट्स ऑल्सो सप्लाइड बाय द by our usual musculocutaneous nerve, and it's also supplied by the radial nerve. जो इसकी यूजुअल मोटर सप्लाई जो इसको कंट्रैक्ट करवाती है वो तो musculocutaneous nerve ही है, लेकिन जो इसे प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस लेके जा रहे होते हैं, जब भी हम किसी जगह बैठे होते हैं हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो ओरिएंटेशन होती है, जो उनकी पोजीशनिंग होती है इन दैट एरिया, वो हमें सेंस हो रही होती है थ्रू आवर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस, ठीक है. सो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस आर द यू कैन से द रियलाइजेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, तो वो फॉर द ब्रेकियालिस मसल होती है वाया द रेडियल नर्व, जबकि बाकी सारे मसल्स की प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस भी किसके जरिए आ रही हैं, थ्रू द मस्कुलोकुटेनियस नर्व. सो ये एक अलग चीज़ थी, एक न्यू बात थी, एक यू कैन से पेक्युलियरिटी है ब्रेकियालिस मसल की, दैट इज सेपरेट, इट इज डुअली इनोवेटिव एज कम्पेयर टू द अदर मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.